I am like literally fried in my brain right now. Thank you so much, Ayush, Vichare, Neil, and Shreyas for keeping your cameras on. And everyone else, this is just one last sincere request for you all to switch on your cameras. I can't keep doing this in every lecture. All right, let's just move on because I don't want to waste my lecture time just on "Kare chalu karo." I feel like more like a beggar than a teacher in that sense. Okay, so moving on. So ohmic and non-ohmic resistors ho gaya. So taking the discussion of limitations of Ohm's law forward, there are other factors which also affect the resistance of a conductor. Okay, and which would these factors be? Then there are four. Temperature. Yes, very good, Shreyas. Temperature. From the limitation of Ohm's law itself, we come to know that temperature is one of the factors. And then there are others also, which is the nature of the conductor, in the sense the composition or material buildup of a conductor. Because obviously each conductor has different kinds of molecules, so that also affects. Length of the conductor, being if it's like a wire, then how long is it? Okay, and length ke saath the other physical Yeah, aspect is the thickness. Yeah. area of cross section. Yes, Amok? Miss, area of cross section भी That होगा. is true. Yes, when I say thickness, it basically means the area of cross section. You're right. Okay, so these are the four factors which also affect the resistance of the conductor. While length, thickness and temperature को हम clear terms में रख सकते हैं, but the nature of the conductor, वो जो पर्टिकुलर फैक्टर है उसको हम रेजिस्टिविटी का नाम दे देते हैं. ओके, सो रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी आर two different things. Resistance is just like the resistance that a particular circuit is experiencing, while resistivity is a very specific resistance, specific in terms of a particular material will have particular kinds of electrons, and so particular buildup की वजह से उसका एक अलग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रहेगा, तो हम उस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी ये नाम देते हैं. Got it? So we'll come to that. Again, this section of the chapter is very important from a direct answer point of view also. कभी कभार वो लोग सिर्फ directly ही पूछ लेते हैं कि just enlist the factors or explain the factors which affect the resistance. Or it's also a very good part from where you will have your applied questions. Generally जो questions में आप लोग को कभी कभार challenge होता है, तो what they'll do, they'll tell कि इसका लेंथ बढ़ गया है तो इसका रेजिस्टेंस कैसे अफेक्ट होगा, या एक पर्टिकुलर स्टोरी बना देंगे कि ये पर्टिकुलर कंडक्टर है, इसका they'll ask you to maybe compare two resistors with a particular factor in mind. So ये जो सेक्शन है इसको अच्छे से समझो आप, क्योंकि इसका अप्लाइड क्वेश्चंस का रेलेवेंस भी है. ओके, आयुष लाड, can you start reading factors affecting the resistance of a conductor? मैंने सुना था कि मतलब जो रेजिस्टिविटी है वो कांस्टेंट है, मतलब जो ऐड कर. It is a constant in terms of when you take all these factors together. It is like suppose we'll actually it's a the ratio is constant is what it is. It basically resistivity जो constant है वो ये है कि हर एक मटेरियल का एक particular nature of material होता है, that is resistivity. You'll understand what I mean. I mean when you put it in terms of ratio and proportion, तो वो एक constant निकल के आता है. Like what happens is resistivity, resistance is directly proportional to length, then resistance is inversely proportional to area, then ये आ जाता है L upon A. ऐसे ऐसे करके फिर जो you don't want this direct proportion, you want to equalize it, then you introduce resistivity. ऐसे करके वो होगा. Let's read, we'll come to it. So one Ayush lad, start reading beta. Yes, yes. The resistance of the conductor depends on the following four factors: material of the conductor, length of the conductor, thickness of the conductor, and temperature of the conductor. So first, dependence on the material of the conductor. Different materials have different concentration of free electrons, and therefore the resistance of the conductor depends on its material. Ayush lad, I can't hear you beta, you'll have to be louder.
Miss, can I change my headphones and be back? Sorry, what happened? Ma'am, can I change my headphones? Okay, fine. I'll give you a chance later. Then tab tak Ayush Vichare, can you read beta? Yeah. Yes, the resistance of a conductor depends on the following four factors: material of a conductor, length of a conductor, thickness of conductor, and temperature of a conductor. Dependence on the material of a conductor. Different materials have different concentration of free electrons, and therefore the resistance of a conductor depends on its material. Metals such as silver, copper, aluminum, lead, etc., have the concentration of free electrons in the decreasing order, so the identical wires offer resistance in the increasing order. Note: substances which have a large concentration of electrons offer less resistance, therefore they are called good conductors of electricity. On the other hand, substances such as rubber, glass, wood, etc., which have negligible concentration of free electrons, offer very high resistance, so they are called insulators of electricity. Okay. Continue So reading. dependence on the length of conductor. In a long conductor, the number of positions of free electrons with the positive ions will be more as compared to a shorter one. Therefore, longer conductor offers more resistance. In fact, the resistance of a conductor is directly proportional to the length of the conductor. That is, R is directly proportional to the length. If the length of a wire of the same radius is double, the resistance of a wire gets less. Dependence on thickness of the conductor. In a thick conductor, electrons get a larger area of cross-section to flow as compared to a thin conductor. Therefore, a thick conductor offers less resistance. The resistance of a conductor is inversely proportional to its area of cross-section A, normal to the direction of the flow of current. If the radius of a wire of the same length is doubled, or area of cross-section becomes 4 times, its resistance becomes 1/3. If the radius is tripled, or area of the cross-section if the area of the cross-section becomes 9, the resistance becomes 1 time and so on. Dependence on the temperature of a conductor. With the increase in temperature of a conductor, the random motion of free electrons increases. As a result, the number of collisions of electrons with the positive ions increases. Hence, the resistance of conductor increases with an increase in temperature. The resistance of the filament of a bulb is more when it is glowing, that is, when it is at a high temperature, as compared to when it is not glowing, that is, when it is cold. Okay. So guys, Neil, where are you? Everyone here? Okay. So firstly, these are the four factors which affect the resistance of the conductor, which is the nature of the conductor, length, thickness. Thickness को ही हम area of cross section बोलेंगे, and temperature of the conductor. Okay. So now the first is the nature of the conductor, which basically means the material composition. Okay. So first point is the material of the conductor. So it's very specific, but of course, even the materials, we know that there are certain materials which are conductors, and then there are certain which can be classified as resistors and the others as insulators. So this will obviously affect the resistance, right? So different substances have different concentration of free electrons. How is it becoming a conductor? You know that more the free electrons, better is the conductivity, right? So according to the concentration of free electrons, the resistance of a conductor depends on its material. So you have silver, copper, lead, aluminium, which you know are very good conductors. So they have a high concentration of free electrons. If they are very good conductors, they are not too good resistors. So they offer very less resistance. And so they are good conductors. But substances such as rubber, glass, wood, ये तो insulator हो गया direct, okay? So they have very less or negligible concentration of free electrons. So they offer very high resistance, and therefore they are called insulators. They have not mentioned in this chapter, maybe aage hoga, but there is an intermediary level between a conductor and an insulator. And what is that called? Anyone knows? What, miss? Either you have materials which are good conductors or something like insulators. Semiconductors.
Semiconductors, all right, okay. And Can you that's also repeat a your good question? point. Yes. Miss, can you repeat your question? My question is, एक है conductors which are very good, मतलब इसका resistance बहुत low है, and एक है insulators जिसका resistance बहुत high है, ठीक है? What can come in between these? Alloys, Alloys, very good, Amog. And what are these called in terms of electricity? semiconductors. This is the word. Resistors. Yes. अच्छा, Semiconductors is also जिनकी resistance में variable होती है, right? yeah. So like you can alter the resistance. Yeah, but हाँ, you wait. जो word किसने use किया? Semiconductors. Now, semiconductors is different from resistors, although this is out of scope of what we are studying. But semiconductors, if you look at your periodic table, semiconductors are what? They are those metalloids. Okay, so they are not really alloys; they are metalloids. And ये इसमें आएगा तुम्हारा silicon, germanium, ये सब, ठीक है? So ये हम लोग ने जो पढ़ा, these fall into the category of resistors only, but these are non-ohmic resistors. जैसे हमने कल पढ़ा जंक्शन डायोड या ट्रांजिस्टर, ये सब जो एग्जांपल हमने कल पढ़े, उसका जो मटेरियल कॉम्पोजिशन होता है वो सेमीकंडक्टर्स का होता है, जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, वो उससे बनता है. ओके, सो इन एन अम्ब्रेला वे you can say conductor, insulator and resistor. Resistor mein obviously you will have semiconductors and which are made up of metalloids, and resistors which are made up of alloys. abhi resistors wire kaun sa hai? Nichrome wire, manganese wire, ye sab. And Yes, generally resistor wires are used in heating devices like तुम्हारी nichrome wire is used. Yes, miss. इस्त्री हो गई, ये हो गया माइक्रोवेव एंड ऑल, वहां पे जो वो पता है वो जो फ्लोरेसेंट येलो ऑरेंज इफेक्ट देता है वो वायर, या दैट इज बिकॉज दैट पर्टिकुलर वायर takes all the electricity. It will not allow entire electricity to flow through it. It will give obstruction. So when the electricity is not able to flow, it is basically getting the electrical energy will convert into heat energy, and we are using that as a heating appliance. Okay, so that is one, you can say it's a use of the knowledge of resistors that we have. Miss, Yes. miss, in all the resistors also the like the electricity which is resisted, it comes out as heat energy, right? Not entirely, of course. You will have some amount of it which is being क्या बोलते हैं, मतलब उसमें dissipation ज्यादा है. You can Yes. say obviously क्योंकि major part is heat energy. Definitely. And miss, since so nichrome wire and all, they have a high melting point, so those wire are used, right? Huh? They have a high melting point, so though they are used. Yes, so that they don't obviously, melt. because you don't want it to melt off with Yes, miss. excess amount of heat. Yes, yes, very much. Okay, so now materials mein basically, if you see what is the textbook talking about, it's talking about the, so we'll just write the keywords, which is material mein the main point which is deciding is concentration of free electrons. अगर concentration of free electrons ज्यादा है, so इसका मतलब the resistance is low, and this is the case in conductors. If you want, I know you already know, इसके examples हो जाएंगे silver, that is Ag, copper, lead is Pb, and aluminium. ठीक है, while concentration of electrons अगर less है तो resistance बहुत ज्यादा है. इसके example हो गए आपके rubber, glass, wood. Okay, and these are called as insulators. हो गया ये point. You can of course add resistors का भी एक खुद से point, but that's fine. Okay, so this is how the material also decides the kind of resistance. Then moving on, because material basically means the availability of free electrons. ठीक है? Now dependence on the length of the conductor. So basically the electrons are going through a conduit. Conduit means a roadway.
right? They are taking the charge going from this end to this end. And let's say abhi material doesn't matter because we will have to see each factor individually, guys. Okay. हम ले रहे एक ही कॉपर मटेरियल, ठीक है? एक जो कॉपर का मटेरियल, एक कंडक्टर जो है कॉपर का, यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन है, it has to go from here to here obviously, and whatever there are obstructions which are there, ठीक है? ऑब्स्ट्रक्शंस तो सेम ही रहेंगे ना दोनों ही मटेरियल्स, दोनों ही कंडक्टर्स में ऑफ कॉपर. यहाँ पे लंबा रास्ता है. व्हाट डज इट लॉजिकली से, किसको ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन मिलने वाला है इन केस ए और केस बी? कहाँ ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा होने वाला है? बिकॉज इफ इट्स द सेम मटेरियल तो ऑब्स्ट्रक्शन तो सेम है, बट किसको ऑन बेसिस ऑफ लेंथ ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा झेलना पड़ने वाला है? आयुष विचारे, व्हाट डू यू थिंक लॉजिकली? Yes, it should be. Yes. Yes, Ayush. What? Can you repeat? In which case do you think will there be more obstruction or resistance? Yes. A. You think in A. Okay. Anyone with a different opinion? Miss, I think it would be E. B. Okay. And why do you think so? Not B, E, E, E. You also think A. I think B में ज्यादा होगा. A पर लेंथ बड़ा है ना, तो कोलिजन्स बढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन से. Yes, guys. So logically अगर सोचे ना, और कोई चीज नहीं सोचनी है, दोनों कॉपर है तो दोनों में फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इक्वल है, और जो पोजिशनिंग ऑफ अदर फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन, अदर इलेक्ट्रॉन्स एंड फिक्स्ड आयंस विल आल्सो बी द सेम. तो इंटरनली दोनों सेम है. यहाँ पे एक ही डिस्टिंग्विशिंग, ऑल्सो मैंने थिकनेस भी सेम ही बनाई है, ठीक है? तो ओनली डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर इज द लेंथ. ओके. तो अब आप ये सोचो कि आप यू आर गोइंग थ्रू अ नैरो लेन. Okay, you are running through a very narrow gully, ठीक है? And there are a lot of obstructions. You go from point A to B, which is just 20 meter, ठीक है? And you go from point A to B, which is 50 meter. तो तुमको obstructions कहाँ ज्यादा झेलने पड़ रहे हैं? When it is 50 meter, right? You are going a longer route, so you are taking in more obstructions, right? Because you are going through the same route, but it is a longer route. So in this case, now if it makes sense to you, what you realize is that more the length of a conductor, more will be the resistance. Are you understanding, Ayush, Neil? Yes? Yes, miss. So यहाँ पे other factors you have to consider as constant, हाँ? वरना कोई मतलब, because you are specifically looking at this factor. So what we are understanding is जैसे length बढ़ती है conductor की, वैसे उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली तुमको ज्यादा डिस्टेंस जाना है ना, इलेक्ट्रॉन्स को उतना ज्यादा रास्ता काटना है विद द सेम अमाउंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन. ओके, सो दैट इज व्हाट इन अ लॉन्ग कंडक्टर द नंबर ऑफ कोलिजन्स विल हैपन व्हाट with positive ions will be more as compared to a short one because the distance is more. Therefore a longer conductor will offer more resistance. Okay. And so this is a direct proportion. More the length, more the resistance. तो direct proportion वाली बात हो गई, right? Yes, Neil. What is the time right now? 25 minutes more. Okay. Come on. Let's just write this down quickly. Length. So length में higher the length, more will be the resistance as the number of collisions will, if you want to mention it, please mention collisions of free electrons with positive ions will increase as compared to a shorter one. And so a longer conductor offers more resistance. ठीक है? So therefore the statement is the length is directly proportional to resistance, or let's just say R is directly proportional to L. इसको आप highlight करो. Okay. And it's इसका proportionality भी direct ही है. मतलब अगर length double हो जाता है तो
तो रेजिस्टेंस भी डबल ही हो जाता है. सो इफ लेंथ बिकम्स 2x, रेजिस्टेंस विल आल्सो बिकम 2x. ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट बिकॉज इसके आगे जो एरिया के साथ रिलेशन है ना गाइज, वो 2x नहीं है, वो स्क्वायर ऑफ एरिया हो जाता है. सो इट्स इंपॉर्टेंट कि प्रोपोर्शनैलिटी किस टर्म्स में है. ऑब्वियसली एरिया में क्यों हो जाता है, बिकॉज एरिया ऑफ अ स्क्वायर क्या होता है, लेंथ में तो इट्स वन डायमेंशन ना, लेंथ इज वन डायमेंशन बट एरिया इज टू डायमेंशंस, है ना. इसके लिए एरिया में स्क्वायर हो जाता है. ओके, नाउ थिकनेस बेसिकली मींस अगर मैं वायर को माइक्रोस्कोपिक व्यू में लूं तो ये मेरा वायर है, ठीक है. तो जब मैं थिकनेस की बात करती हूँ, ये तो उसका लेंथ हो गया, राइट. जब थिकनेस की बात कर रही हूँ तो मैं इसकी बात कर रही हूँ, ठीक है. अब मैंने सिलिंड्रिकल वायर है, तो ये जो है वो क्या हो जाता है मेरा थिकनेस, विच इज द एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल. इसीलिए हम उसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे भी वायर को कट करूंगी तो वहां पे यही सर्कल आएगा विद द सेम काइंड ऑफ डायमेंशंस. ओके, सो थिकनेस को ही मैं, अगर मेरा कंडक्टर जो है जनरली तो सिलिंड्रिकल ही होता है वायर, बट अगर मेरा कंडक्टर ऐसा क्यूबॉइडल है तो क्या हो जाएगा, या मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. सो माय थिकनेस इज बीइंग डिटरमिन्ड बाय दिस एरिया राइट हियर. ओके, सो जहां भी आप कट करोगे और जो आपको क्रॉस सेक्शन मिलेगा, दैट represents my thickness. Okay, so basically thickness is the area of cross section. Okay, now you tell me, again going back to the गली example, आप एक छोटी सी गली से जा रहे हो और आप एक बड़े हाईवे पे चल रहे हो, आपको ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ ज्यादा मिलेगा, छोटी सी गली में. छोटी सी गली में, बिकॉज दैट इज Miss, स्पेस ही कम है ना. बट अगर हाईवे है, थोड़ा सुटित है ऐसे बोलेंगे, तो यू हैव मोर प्लेस एंड देयर बाय लेस ऑब्स्ट्रक्शन. कंसिडर इन द सेम वे जो कंडक्टर है, बाकी सब चीजें कांस्टेंट Yes. पकड़नी है. यस श्रेयस. Miss, but if the like area increase, if the thickness increases, then the positive ions and then the negative ions, like the positive ions also increase, right? So मतलब जितना वो एरिया साइड में इंक्रीज हो रहा है, उधर भी तो पॉजिटिव आयंस होंगे, तो मतलब रेजिस्टेंस उनको सेम ही जाएगा, लगेगा. नहीं, ऐसा नहीं है श्रेयस. देख तू, आई अंडरस्टैंड योर पॉइंट इज वेरी वैलिड, बट मैं मटेरियल का थिकनेस बढ़ा रही हूँ तो जो है उसके वजह से एरिया ज्यादा हो रहा है, ठीक है. मतलब you just get more space, the electrons just get more space to move around. I understand what you're saying. मतलब इलेक्ट्रॉन्स को जो स्पेस मिलेगी, वहां तो पॉजिटिव आयंस नहीं होंगे क्या? I'm trying to नहीं होंगे, पॉजिटिव आयंस होंगे, बट with that added positive ions there will still be more space for them. Okay, yes. what is happening is, like suppose if this is an arrow, हम पकड़ ले पॉजिटिव आयंस यहाँ पे 1 2 3 और 4 है, ठीक है. अब मैं डबल द थिकनेस की बात कर रही हूँ, ठीक है. तो यहाँ पे 8 होने चाहिए. दिस इज लाइक वेरी स्पेसिफिक टर्म्स, ऑब्वियसली ऐसे नहीं, बट अभी ये 8 को एडजस्ट होने के लिए स्पेस ज्यादा है ना. तो let's say I'm making like these 8 electrons randomly, but now if you look at this space, Shreyas, then देखो यहाँ पे कितना नैरो रोड है. यहाँ पे डेफिनेटली तेरे आयॉन्स बड़े ही है, बट स्टिल थोड़ा रास्ता खाली लग रहा है कि नहीं. Yes, miss. Yes. Understood? So even though of course your ions are not going to decrease or anything, but because the area is increased, they'll adjust in a way, I mean you just have more space, and therefore obstructions, the pass, the way for the electrons is better. Okay, let me just increase. पंखा लगाना था, गर्मी हो रही थी, जब बैठी थी तब ठंडी हो रही थी. Okay, so let us just write about this quickly. Thickness, then सिर्फ keywords लिखो my boys and girls. So thickness का मतलब
if they are getting a larger area of cross section to the flow as compared to a thin conductor, therefore a thick conductor offers a less. So more the thickness, less will be the resistance. So this means the proportionality is inverse. Okay. इसी को हम area of cross section भी बोल सकते हैं of a conductor. So make sure you write that as well. And इसीलिए thickness को we write as A because it's basically related to the area of cross section. So R will be inversely proportional to area of cross section. Now, however, the relation is such कि if the radius of the wire of same length is doubled, radius, right? Because area, suppose हम cylindrical ले रहे हैं, तो अगर हम इसका thickness बढ़ा रहे हैं, okay, let's say 2 सेंटीमीटर था और अभी इसका डबल करके हमने 4 सेंटीमीटर किया है, तो सिर्फ रेडियस डबल हुआ है, बट एरिया क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, अंडरस्टैंडिंग? सो वो 4 स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा 16. तो ये जब डबल हो जाता है, whenever your even if your thickness or if your radius is increasing or one dimension is increasing, the overall effect on the resistance is square. ठीक है? But square in the sense of inverse. ठीक है? इसका मतलब क्या है कि अगर radius जो है, let's say I can write it in red like this, कि अगर आपका radius हो रहा है double 2x, okay, तो आपका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? 1/2x द होल स्क्वायर. 1/q क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और स्क्वायर क्यों? क्योंकि वो एरिया है. सो दैट विल बिकम 1/4x स्क्वायर. सो ये हो गया डबल. तो डबल का अगर इनवर्स 2 का इनवर्स देखेंगे तो 1/2 होना चाहिए, बट ये 1/2 स्क्वायर हो रहा है, 1/4 हो रहा है. आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो डबल का हो जाता है 1/4. So the relation is inversely related to the square. ठीक है? In the same way, अगर radius तुम्हारा 3x हो रहा है, sorry, small r होगा radius. अगर radius तुम्हारा 3x हो रहा है, तो resistance हो जाएगा 1/3x the whole square. Okay, यानी area तुम्हारा उतना हो जाएगा, यानी 1/9x square. So ट्रिपल का हो जाएगा 19. एंड यू कैन कीप गोइंग ऑन लाइक दिस. अगर 4 टाइम्स हो गया तो ये हो जाएगा 1/16. क्या 1/16 ऐसे लिख सकते हैं. तो ये वाला रिलेशन समझा है. अभी लास्ट है टेम्परेचर. ठीक है, ये हो गया लिख के. कैन आई मूव द नेक्स्ट पेज? सबने लिख लिया है? यस यस. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज we are talking about the temperature. Okay, fourth is the temperature. So ये तो हमने कल भी डिस्कस किया था कि अगर हीट बढ़ता है तो क्या होता है? with an increase the kinetic energy of the electrons increases, right? Because they are getting more heat. So ज्यादा हिलेंगे तो collision का amount बढ़ जाएगा. Okay, and therefore resistance increases with temperature. Okay, the resistance of a filament of a bulb is more when it is glowing. ये वाला point याद रखना for your applied question. ठीक है, कभी कभी ऐसे बोलेंगे कि filament of a bulb is glowing, उसका high resistance है, या ऐसा 2 बल्ब बना दिए, एक का normal light है, एक का filament glow हो रहा है, तो which is offering more resistance? And obviously the bulb which is glowing more, वैसा कुछ. Okay, so when it is glowing, it is at a high temperature as compared to that when it is not glowing or when it is cold. Okay, so temperature basically with heat, random motion of electrons increases. Okay, therefore collisions increase, and as collisions increase, resistance increases. Okay, so increase in temperature results in increase in resistance. Okay,
that's about it. इसमें और कुछ तो है नहीं. Also one thing that we need to note is glowing wala. Okay, so that can be used as an example, that a glowing bulb and a not glowing bulb. So glowing bulb का जो है वो resistance ज्यादा है and इसका resistance कम है. About it. Okay. Abhi, I wanted to look in the textbook for the VI graph for a conductor at 2 temperatures. So kya? Neil, don't lose your patience. It's not even 1 hour. Not giving me time, and let me finish this topic at least, beta. Okay, so look at the graph in the textbook. Okay, you have two different temperatures, T1 and T2, and जहाँ पे बोला है temperature T1 is greater than T2. Okay, तो जो है कंडक्टर A का ज्यादा टेम्परेचर है, कंडक्टर B का कम टेम्परेचर है. तो उनका अगर तुम VI ग्राफ देखोगे तो मैंने बोला था कि जब स्लोप ज्यादा स्टीप है इसका मतलब उसका रेजिस्टेंस ज्यादा है, राइट? स्टीप मतलब दिस इज अ स्टीप एंड दिस इज अ जेंटल स्लोप, सो दिस इज मोर स्टीप, सो इसका मतलब इसका रेजिस्टेंस ज्यादा है. ये जेंटल है स्लोप तो इसका रेजिस्टेंस कम है. ओके, सो अगर आप ये VI फिगर 8.7 के VI ग्राफ को एनालाइज करते हो तो ग्राफ A जो है मतलब A का जो स्लोप है वो स्टीप है एज कंपेयर टू B का स्लोप, क्योंकि A का टेम्परेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू B. वो पहले ही बोला है T1 is greater than T2. So this shows through a graphical way कि when it is more steep means the resistance is more. And why is the resistance more for A? Because उसका टेम्परेचर ज्यादा है. बस वही चीज को वो लोग बोल रहे हैं. So higher temperature offers more resistance. ठीक है, तो इसमें कुछ अपने को लिखने की ऐसा जरूरत नहीं है. Again this question can come as a applied question. ग्राफ बना दिया तो ऐसा कुछ. ठीक है, मूविंग ऑन. अब हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस चालू करें कि नहीं? नील को देखो रे, नील ऐसे कर रहा है. ओके, जस्ट हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डेफिनेशन लिख देते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस वील डू इन द नेक्स्ट क्लास एंड वील कंप्लीट दिस यूनिट ऑब्वियसली. इट्स नॉट टू मच बिकॉज हमने आज जो किया ना उससे ही रिलेटेड है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. यस, कोई कुछ बोला? मैं ही बोल रहा था. मिस आपने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के न्यूमेरिकल अपलोड किया वो हम लिखते क्या नोटबुक में या जब आप थोड़ा जोर से बोल बच्चा. आपने जो करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियोस अपलोड किए हैं ना गूगल क्लासरूम पे वो हम स्टार्ट करें लिखना या जब व्हेन यू वुड स्टार्ट दैट टाइम यू शुड राइट? No, I will anyways be doing the numericals with you in live class as well. So no need to do it because उसमें मैंने सिर्फ न्यूमेरिकल समझाए हैं. ओके, तो प्लस तो अगर एंड में देखेगा तो अपने जो लाइव क्लासेस है वो उसमें अपलोड हुए, 2-3 हुए रहेंगे अब तक. अभी 3-4 जो अभी अभी नए हैं वो बाद में like 2-3 days बाद होंगे. So as of now don't see. Once I'm done teaching the numericals and you want to refer to it, because उसमें हर एक numerical solved है, so you can go and refer to those numericals. That okay. Now the resistance of a wire. So basically हमने experiment या ऊपर से हमने ये सीखा. So we are basically starting with specific resistance. So इसको एक specific resistance जैसे मैंने starting में बोला था, specific resistance इसी को हम बोलते हैं resistivity. And it is different for different materials. ठीक है, so the resistance of a wire, first thing we know is resistance of a wire is directly proportional to length. Then resistance of a wire is inversely proportional to area, which can also be written as it is inversely proportional to the square root of to the square of the radius, या ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रहा लेंथ के बारे में. ये रहा सेकंड स्टेटमेंट थिकनेस के बारे में. अगर इन दोनों को हम कंबाइन करें, कंबाइनिंग दीज टू इक्वेशंस, combining 1 and 2, okay, so I can write length in the numerator while keeping the
proportionality sign. Length is the numerator because it's directly proportional, and area in the denominator. Okay, this is one way to write it. और अगर area की जगह मुझे pi r square लिखना है तो भी length तो numerator में रहेगा और pi r square denominator में. This is my combination of the above, right? Now, I don't want the sign of proportionality. Okay, I want to equalize this. If I want to equalize this, you have known since your 9th standard that if proportionality का sign निकल के equal करना है, then you have to introduce a constant. Okay, now here the constant is specific resistance of the material. हर एक material का specific resistance अलग रहेगा. Okay, so that is what is going to happen here. So if I want to equalize, this will become R equal to proportionality का sign निकल गया. ये एक P जैसा कुछ है ऐसा. इसको ही हम resistivity बोलते हैं. P L upon A. या R equals to. Amo, can you be louder? Miss, ये density 1 second ना. वाला Let वही me है। see. I think मेरा volume कम हो गया है क्या कंप्यूटर का? मेरे को सच में सुना ही नहीं दे रहा तुम लोग क्या बोल रहे हो. Yes, even I can't hear his voice. हाँ बोलो. Can you hear it now? Yes, yes. बस मैं बोल रहा था कि वो डेंसिटी वाला रो ही है वो P. हाँ, the letter, the symbol is that only, but here it is a different, उसका meaning different है. Okay, so ये ऐसा हो गया L upon pi r square. Okay, so here we are concerned with understanding what this is. It's specific resistance which is offered by the. तो तीन मेन है, लेंथ और एरिया तो हो गया. मटेरियल ऑफ वायर जो है इट इज डिफरेंट एंड यहाँ पे as a constant of proportionality it will be this resistivity. Okay, it is called the constant which is called specific resistance or resistivity. Okay, so हमको ये लिखना है. This is called as the constant which is basically specific resistance or resistivity. It's not the same as resistance, guys. Resistance का unit होता है ohm. ये specific resistance या resistivity, it's not the same as resistance. इसका unit भी अलग रहेगा. Okay, अब unit क्या रहेगा? Okay, specific resistance का हम definition के पहले इसका unit देखते हैं. Basically, अगर मेरा ये है relation R equals to रो L अपॉन A, तो मैं इसको आइसोलेट करूंगी. ठीक है, मैं ये रो को आइसोलेट करती हूँ तो क्या आ जाएगा? रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल टू R के साथ A मल्टीप्लाई होगा और नीचे L आ जाएगा. बराबर है कि नहीं? ओके, सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ R? द यूनिट ऑफ R इज ओम इनटू एरिया का यूनिट है मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर. तो ये मीटर स्क्वायर, ये मीटर और ये मीटर स्क्वायर का 1 मीटर, तो क्या बचता है? ओम. ओम मीटर. सो इसका यूनिट होता है ओम मीटर. रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? ओम मीटर. Got it? That is a derivation of the unit of resistivity. And what you also have to understand is कि अगर length 1 है और area 1 है, okay? So I'm going to write that over here, that if length is unit value, area is also unit value. ठीक है, मतलब 1 मीटर और area 1 मीटर स्क्वायर हो गया. तो in that case the resistance will be equal to resistivity. That is only if. ठीक है, तो specific resistance का हम definition पीछे लिख देते हैं. Okay, oops, sorry, just cancel it out. These are two different sections. ये लिख लिया है सब लोग ने? This is the unit. Yes, miss. Meter. Okay. Now next page में we'll just finish writing the definition of specific resistance. So specific resistance. देखो guys, definition जैसे मैंने बोला है आपका perfect होना चाहिए. Okay. Specific resistance is very subjective. It is of a material. Okay. It is the resistance
offered resistance of a wire of that material of unit, because मैंने जैसे बोला अगर ये 1 है और ये 1 है तो it is equal to resistance. So specific resistance is the resistance of that material of unit length and unit area of cross section. That's all. So actually इसका definition तो बड़ा easy है, ठीक है? So this is your definition. Now we are mostly done, but I just want you to look at the table. Okay, specific resistance of some substance at 20 degrees Celsius. A common इस temperature पूछते है. हैं क्या एग्जाम में इनके वैल्यूज? नहीं, ये टेबल नहीं पूछेंगे, बट क्या है ना नील, तुझे पता होना चाहिए कैटेगरी और एक क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, ठीक है? क्योंकि उस हिसाब से अप्लाइड क्वेश्चन में देखो काम आएगा. यानी उन्होंने कंपैरेटिव में ले लिया एल्यूमिनियम और कार्बन को. तो तुझे पता है कि कार्बन इज अ सेमीकंडक्टर और एल्यूमिनियम इज अ कंडक्टर, तो रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? रेजिस्टिविटी कार्बन की ज्यादा होगी. कार्बन की ज्यादा होगी. समझा? तो उस सेंस में थोड़ा वो वाली स्टडी करनी है. तुझे एक्चुअल वैल्यूज पता नहीं होनी चाहिए, दैट्स फाइन, बट यू शुड नो कि व्हिच कैटेगरी एंड व्हाट इज द क्रोनोलॉजी. मतलब बेसिकली इतना याद रखना है जिसका वैल्यू कम है, रेजिस्टेंस कम है, उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा. टेम्परेचर नहीं, रेजिस्टिविटी. रेजिस्टिविटी सॉरी. हाँ, टेम्परेचर सबका कांस्टेंट लिया है 20 डिग्री सेल्सियस. यहाँ पे हम तीन ही फैक्टर से काम कर रहे हैं, लेंथ, एरिया और नेचर ऑफ मटेरियल व्हिच इज रेजिस्टिविटी. टेम्परेचर तो हम कांस्टेंट ही रख रहे हैं. इवन इन मेटल्स इफ यू सी, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसकी जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो सबसे कम है, या रेजिस्टिविटी सबसे कम है. कॉपर की उससे थोड़ी ज्यादा, एल्यूमिनियम, लेड, टंगस्टन. सो यू आर अंडरस्टैंडिंग इवन इन मेटल्स, इफ इट्स नाइस इफ यू विल नो योर क्रोनोलॉजी कि मेटल में स्टील जो है वो थोड़ा सा ज्यादा रेजिस्टेंट है, ठीक है? टिन, इनफैक्ट स्टील मेटल है क्या? नहीं सॉरी, हाँ स्टेनलेस स्टील एलॉय है. सॉरी ओके. एलॉयज में यू हैव ब्रास, मैंगनीज, कांस्टेंट, नाइक्रोम. ये जो एलॉयज है ये रेजिस्टर्स कहलाए जाते हैं. सो यू कैन सी कि दे आर आल्सो ऑफरिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस. ओके, इनफैक्ट वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट कि स्टील का जो रेजिस्टिविटी है और ब्रास का उससे कम है इनफैक्ट, ठीक है? तो ऐसे कुछ एक्सेप्शंस भी है व्हिच यू कैन मेक अ नोट ऑफ, राइट? कि brass as even as an alloy has less resistivity. Okay, so that one thing you can mark. बाकी मैंगनीज, कांस्टेंट और नाइक्रोम तो प्योरली रेजिस्टर्स है, तो इनकी तो रेजिस्टेंस अच्छी होनी चाहिए, तो हीटिंग डिवाइस के लिए यूज होता है. उसके ऊपर से सेमीकंडक्टर्स. so semiconductors offer more resistance as compared to alloys. That is something which you need to make note of. Understood? ये proper categories दी है. तो सेमीकंडक्टर्स ज्यादा है रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हैं, ग्राफाइट, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन, ठीक है? मूविंग ऑन, इंसुलेटर्स तो रेजिस्टेंस बहुत ही करेंगे. सब जगह आपका नेगेटिव इंडेक्स है, बट इंसुलेटर्स में इंडेक्स पॉजिटिव ही है. ओके, सो इंसुलेटर्स तो ऑफर अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस. क्लियर गाइस? सो Yes, miss. हाँ नील खत्म हो रहा है मेरे जो शादी. ओके, सो इसका कल चाहिए तो ज्यादा रख दो. हाँ बच्चे, आई डोंट वांट टू. एनीवेज फिजिक्स थोड़ा तो ऐसे बहुत मतलब स्कूल में